Okay, listen everybody. In previous classes, we have already completed speed, distance, displacement, speed, velocity. Today, we will only discuss about acceleration. Acceleration. ठीक है जी? Acceleration. A. ठीक है, acceleration. ठीक अच्छे छोट हो जाऊँ. ओके लेट मी सी. आवाज आस सब जाक साउंड आसूची क्लियर. ओके ठीक अच्छे सेटा को लिखाई कि बड़ बड़ कर लिखिदेवा. डोंट वरी अबाउट दैट. एक्सीलरेशन है मोशन एक्सीलरेशन. विजिबल हो समझते ठीक अच्छे. नेक्स्ट कम टू द एक्सीलरेशन. मत नेक्स्ट क्लास मन पकेबू तो मत ये कर मार्कर ये करी इंक आनी ठीक अच्छे. सेटा चलो मार्कर. ओके डेफिनेटली विल प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सीलरेशन? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. This word, this is your rate of change of velocity. That is your velocity is changing. Either you are increasing your velocity or decreasing your velocity, or velocity is constant. For example, तुम गाड़ी गोटे सेम स्पीड रे जाओ, यू आर ट्रैवलिंग इन ए सेम स्पीड ठीक अच्छे. गाड़ी स्पीड कांस्टेंट अच्छे. देन सेकेंड पॉइंट इज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, तो स्पीड ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाऊँ. देन सेकेंड वन इज व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक, योर स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस. दैट इज योर थर्ड केस. In one case you are increasing your speed, that is a acceleration दबाव. You are accelerated your vehicle, you are accelerated your body. And another one is your speed, your velocity is gradually decreasing when you are applying brake. For example, मैं जाऊँ बाटर गोटे मोमो स्टॉल देख लो, हे ब्रेकटा मारल, गाड़ीर स्पीड रिड्यूस है. सो एक्सीलरेशन इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी चेंज होची तो मन तो जेबे जेबे वर्ड रेट लगे दिया. लिसन दिया एंड संप्रीति ऑल्सो एवरीबॉडी काव्यांश. तो वर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड आमर किए रहा लक्ष्मी समस्त देख पटे ऑल द 9th स्टूडेंट ऑल्सो. तो द वर्ड रेट मीन्स कौन? वेलोसिटी तो चेंज हो. देयर इज 3 केस. इधर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, योर वेलोसिटी is constant. केस नंबर आर कांस्टेंट छोट हो जाए ठीक अच्छे. योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. दिस इज v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. v1 इज कांस्टेंट. अनदर इज इंक्रीजिंग, another is decreasing. 3 case. Your initial velocity is same as final velocity, and his initial velocity, your final velocity is greater than initial velocity, and here is final velocity is less than initial velocity. 3 case. 3टा जिनस हुए. और जिते बड़े भी whenever your velocity, if your velocity is changing, then the body is said to be accelerated body. A body is said to be accelerated body. Now the word rate of change of velocity means what? So your velocity is changing, but in how much rate? तो velocity change तो है जने sudden break मारला, जने slowly break मारला. तो velocity both the cases velocity is decreasing. But what is happening? If someone is applying brake suddenly, then velocity falls down or velocity decreases suddenly. हाँ
So in that case, when we will find out, in that case we will get that in some case the magnitude value of acceleration will be greater and another value will be smaller. So the rate of change of velocity means what? That is your del v upon del t. तो ये वार सिंबल, ये सिंबल उन्हें के भी कन्फ्यूजन हमारा है, बिकॉज इट्स मीन्स व्हाट? दैट इज योर डिफरेंस माने कौन? डिफरेंस द वेलोसिटी डिफरेंस कौन है? दैट इज योर, यू कैन राइट v2 minus v1 divided by t2 minus t1. You can also write that is final velocity minus initial velocity by time, final time minus initial time. You can also write simply v minus u by t, that is your change in time केते चेंज and velocity केते चेंज. ठीक अच्छे, that is rate of velocity, rate of change of velocity change in velocity, that is your change in velocity by change in time, or you can write also here that is equal to change in velocity divided by change in time. Now देखो, जो तुम गाड़ी स्पीड कांस्टेंट अच्छी, इफ your vehicle speed or your speed is constant, तुम इनिशियल वेलोसिटी जेतिक अच्छी और फाइनल वेलोसिटी इज सेम, यू इज सेम, तो तुम कह विथ 5 मिनिट रे और तुम 9 AM स्टार्ट कर 8 PM कि 8:30 स्टार्ट कर 9:30 तुम एक्सेलरेशन कौन थी, जो तुम गाड़ी स्पीड ही सेम अच्छे, गाड़ी वेलोसिटी ही सेम अच्छे, देन तुम चेंज इन वेलोसिटी फास्ट केस ये कौन हम? फास्ट केस ये फास्ट केस तुम ये चेंज इन वेलोसिटी कौन है तुम? तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस यू इक्वल टू 0. जे मोर वेलोसिटी केते चेंज होइछि? 0 चेंज होइछि. व्हाट एवर द टाइम पीरियड, केते भी टाइम पीरियड तुम नियो, 1 hour 2 hour केते भी टाइम पीरियड, तो एनी टाइम पीरियड यू कैन टेक 1 hour 1 minute, एनी टाइम फ्रेम यू कैन टेक also. In both the cases, as your velocity is constant, so there is no acceleration. So in this case, your acceleration will be 0 by time, whatever it may be time, acceleration will be 0 meter per second square. Acceleration introduction में देइथिली, acceleration unit SI unit of acceleration, as it is a SI unit of acceleration, SI unit of एक्सेलरेशन. तो यहाँ कौन करा एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कौन बोले तुम वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी कौन? मीटर पर सेकेंड, टाइम न कौन? सेकेंड, तो व्हिच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट ऑल्सो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, m is to the power -2. Now this is your first case number 1. If you are increasing your speed gradually, तुम गाड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़े जाओ, तो नो डाउट इन दिस केस तो चेंज इन वेलोसिटी कौन बनिबो? सो चेंज इन वेलोसिटी कौन बनिबो? दैट इज इक्वल टू v माइनस u, व्हिच इज पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज v ग्रेटर अछि. सो दिस इज इन दिस केस सेकंड केस acceleration will be positive del v upon del t, change in velocity by change in time, answer will be positive. तो acceleration कौन बनिबो? acceleration positive बनिबो, and the body is said to be accelerated body. The body is said to be accelerated body. That body is said to be accelerated body. Okay, got it. Now come to the third case. When you are applying brake, in that case your final velocity is less than initial velocity. Your velocity is decreasing instead of increasing. Your velocity is decreasing, गाड़ी स्पीड कम होची. ठीक अच्छे, तो गाड़ी स्पीड कमिले तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी कौन आसी मते? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस u, व्हिच इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आसी, नेगेटिव वैल्यू. सो एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. टाइम केवे भी नेगेटिव हे परिबो ना, चेंज इन टाइम. वन थिंग माइंड इट, चेंज इन वेलोसिटी, इट दिस चेंज इन वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी 0, मे बी नेगेटिव.
and acceleration change in velocity positive hele gadi speed बढ़ी thile then it will called as accelerated body. Here is acceleration 0, here is acceleration positive, and here is acceleration negative. ठीक अछि. On applying brake, so here answer will be acceleration negative. So this is called as deaccelerated body. This is called as deaccelerated body, also called as retardation. Light give me देखिए ओके बुझा पड़ा कि तो एक्सीलरेशन केतल पॉजिटिव हो केतल नेगेटिव हो केतल जीरो हो. इन दिस केस इस इज कॉल्ड एज डीएक्सीलरेटेड बॉडी और इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन. जो तू भलसे देखिबू देख ए ग्राफ दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट ग्राफ. पॉइंट ए रु बी एटा होची वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम. हियर ये एक्सिस रे कोन होची वेलोसिटी, ये एक्सिस कोन होची तोर टाइम इन सेकेंड. देखो ए रु बी ये स्लोप कोन होची पॉजिटिव ग्रेडियंट. मो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होची बढ़ुची, एटी एक्सीलरेशन कोन पॉजिटिव. आर देखो बी रु सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज होची, तो एटी एक्सीलरेशन कोन बनियो तमरो नेगेटिव. एटी एक्सीलरेशन पुणी गाड़ी स्पीड बढ़िला पॉजिटिव, गाड़ी स्पीड कमिला नेगेटिव. नाउ एटी कौन हम एक्सीलरेशन आर व्हाट विल द एक्सीलरेशन फ्रॉम ई टू एफ. ई टू एफ एक्सीलरेशन कौन बनिबो ई टू एफ नो. देख मन रखिए गोटे जिन दिस इज बिलो योर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस. आर मीनिंग होची तो गाड़ी स्टार्ट कलु पॉइंट ए रु गाड़ी स्पीड बढ़िला बी पर्यंत एक्सीलरेटेड बॉडी पॉजिटिव. बी रु सी तू गाड़ी ब्रेक मारलु एवटू बी रु सी कौन गाड़ी ब्रेक मारलु एटी कौन कलु नेगेटिव, एटी ब्रेक मारिछु. पुणी एगेन सी रु डी गाड़ी पुणी स्पीड होती तोर पॉजिटिव. पुणी एगेन डी रु ई गाड़ी तोर कौन अच्छे स्लो हो एक्सीलरेशन नेगेटिव ब्रेक मारिछु पुणी यू हैव अप्लाइड ब्रेक. नाउ इफ विल कंसीडर फ्रॉम ई टू एफ तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज होची बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इट इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट मीन्स एवटू तो यू टर्न नहीं एवटू पुणी रिटर्न आसी एपटू. एटा होची डी ई पॉइंट. ना दिस इज ई पॉइंट, ई रु एफ पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. तो देखो एटा ऊपर को जाउची दिस फ्रॉम एफ पॉइंट दिस ग्राफ इंडिकेट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बट दिस इज velocity, your velocity is decreasing. So F to G, from F to G point you have again applied brake negative. तो ये तले this down below the x axis, below the horizontal axis, it indicates your velocity is increasing but in opposite direction. One thing mind it, this is very important. This is very important. Got it or not? Got it or not? Now come to the 0f पड़ेगा. Now this is the twist. 0h, 0h एटी कौन बनी 0h? Definitely not. Velocity is increasing. सडन गाड़ी बढ़ी पूरा साइकिल बढ़ी गाड़ी स्पीड सडन बढ़ी. एक्सीलरेशन हाँ वेलोसिटी इंक्रीज है एक्सीलरेशन पॉजिटिव. एच रु आई देखिए कौन है this is velocity is constant, here v is constant. Velocity constant means गाड़ी speed constant अछि. That means my vehicle speed is constant, neither changing or neither accelerating nor retarding.
ना मु वेलोसिटी इंक्रीज करुच्ची ना वेलोसिटी डिक्रीज करुच्ची ठीक अच्छे एक्सेलरेशन 0 हम बिकज एक्सेलरेशन 0 हम इन दिस केस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 then this is your retardation case negative the here acceleration equal to positive all these are called acceleration here acceleration equal to here acceleration equal to here acceleration equal to positive now again same case j to a ये ब्रेक मारता जी अप टू जी पॉइंट रू पुणी जाइए ऊपर जाइए एगेन जी पॉइंट रू पुणी ए डायरेक्शन में जाइए जी पॉइंट जी रु एच हाँ ये ए डायरेक्शन में चलता है ए डायरेक्शन में अब ए डायरेक्शन आसला एगेन पुणी ए डायरेक्शन में जाऊँ ए डायरेक्शन में जी रु एच दिस इज योर जी रु एच एगेन स्पीड बढ़ी सो ये हूँ एक्सेलरेशन तोर पॉजिटिव then h to I your velocity is constant h to I v equal to acceleration equal to 0 because v equal to constant h to I then I to j again velocity कौन होची decrease होची velocity decrease होची but direction same अछि I to j तो acceleration equal to negative एटी कौन होची ब्रेक अप्लाई करछु I to j now next come to j ru k এইটা তো আচ্ছা ঠিক আছে acceleration equal to 0 understood or not बुझा पड़ा अंडरस्टूड और नॉट ओके देन प्रोसीड तो एबे देखिए आम एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ तो मन रखिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मीन्स व्हाट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू थिंग वन इज योर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives you acceleration the next area under velocity time graph area under velocity time graphs gives you displacement equal to displacement तो बॉडी ये बॉडी केते डिस्टेंस कवर करते डिस्प्लेसमेंट कवर करमती कौन जान देख तो ये देखो यहाँ कौ फॉर्मेट अच्छे ट्रापेजियम आउट एरिया बाहर कर ट्रापेजियम एरिया फॉर्मूला कौन दिस इज ट्रापेजियम एरिया आर एरिया बाहर पारे बाहर पारे आर एरिया ये बाहर ओके गॉट इट चार एरिया ठीक अच्छे ना तो ट्रापेजियम एरिया फॉर्मूला कौन हाफ इंटू एरिया ट्रापेजियम करें हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड L प्लस L2 इंटू हाइट पैरेलल साइड गिवन अच्छी दिस वन इज पैरेलल साइड यहाँ कौन केमती कन्वर्ट कर यार एरिया देख जो भलसे देखो तुमको ये देखो ये डिवाइड करदेव ये बन ट्रापेजियम ये भी गोटे ट्रापेजियम ठीक अच्छे अच्छा एरिया नेक्स्ट क्लास रे फाइंड आउट करिया ए विषय करदेवा पेशेंस अच्छी ओके देन प्रोसीड तो आ अंडर एरिया में केमिति कोन बाहर करबा एरिया अंडर ए बी अंडर एरिया केते बाहर करबा तो ये गोटे ट्रापेजियम देखो लिसन हाँ गोटे देख एटा हूँ ट्रापेजियम पैरेलल आर भैल्यू केते एटा भैल्यू ओ ए दिस इज योर तुम एटा कौन देछि हमर किछि गिवन देने गोटे नाम नहीं जो एम नहीं जीवा दिस योर एन एटा हूँ पी ए एग्जांपल फॉर एग्जांपल तो ओ ए प्लस एम बी इंटू हाइट हूँ केते ओ एम
ठीक अच्छे। तो केवल ए बी अंडर रे एरिया ये केते डिस्टेंस ए रु बी ऑब्जेक्ट केते डिस्टेंस ट्रैवल करिछि हाफ इंटू ओ ए प्लस बी एम ओ ए प्लस बी एम होल इंटू हाइट केते ओ एम तो सिमिलरली ए ट्रापेजर बाहर परिबो ए ट्रापेज हमर देन अगेन देखिए आम बी सी बाहर जो सिमिलरली सी डी बाहर परिबो ट्रापेज तो डी ई ट्रापेज दरकार नहीं ट्रायंगल अच्छे दिस इज ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एटा तो को फॉर्मेट अच्छे स्क्वायर अच्छे तो आर भी आम एरिया बाहर कर परिया तो आम कौन बाहर आर डिस्प्लेसमेंट बाहर परिबो आर एरिया बाहर पड़े तो ये सब जगह सेम फॉर्मेट अच्छे गोटे ट्रायंगल थी गोटे ट्रापेजियम थी अंडरस्टूड और नॉट देन जिनस हूँ कौन आम नेट केते डिस्टेंस कवर कर डिस्प्लेसमेंट कवर कर जार भी भैल्यू बाहर एवरीथिंग ये सबूर भैल्यू को जो आम आड करदे ऑल भैल्यू दैट विल कौन आमर केते डिस्टेंस कवर कर डिस्प्लेसमेंट केमती बाहर करवा अपर एबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एबव द एक्स एक्सिस ये भैल्यू सब कौन करिया आम ऐड करदे सबट्रैक्ट करदे वाई एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस और बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये सब जगह से सबट्रैक्ट करदे ताले तार बाहर जीव एमान सब जगह ऑटोमेटिकली बाहर जीव एरिया रो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाफ बेस दिस हाइट दिस अंडरस्टूड और नॉट ओके गॉट इट ठीक अच्छे।